Namaskar children, how are you all? I hope you are well. Now let's start our session. Join your hands, close your eyes. Now start with a prayer 3 times. Om Bhurbhuvasvaha. Om Bhurbhuvasvaha. Tatsaviturvarenyam. Bhargo devasya dhimahi. धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Relax. Open your eyes. Now children, how are you? Now today I will going to take about two community helpers, teacher and cobbler. Now children, today's activity is I will draw some picture of used by teacher, जो टीचर यूज करते हैं. ओके. नाउ चिल्ड्रन, I don't have teacher's picture, so I will write only name, teacher name. Okay. So I will draw. Now tell me which picture is this? What is this? This is a blackboard. This is a blackboard. A teacher is a great source of knowledge. आपको नॉलेज किस में से मिलता है? टीचर्स से. टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं. आप स्कूल जाते हो, पहले प्रेयर करवाते हैं आपको, फिर आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर आपको डिसिप्लिन मैनर्स सिखाते हैं. ओके. सो prosperity and enlightenment by which anybody can be benefited. आपको जो बेनिफिट होते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, वो आपको कहाँ से मिलते हैं? टीचर्स से मिलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट आई विल ड्रॉ what is this? Table. Teacher used the table. Yes. Now I will draw. Now think and tell me. Which thing is this? Chalk. Coloring chalk. Okay. Now next book. This is a book. Now I will draw आपको जैसे भी आए आप इटसेल्फ ड्रॉ करना. ओके. Now I will draw duster. This is a teacher things. Now I will draw. Now
I will draw cobbler things. Okay. With things used by cobbler. Cobbler are people who make and mend shoes and boots. हमारे रिपेयर कौन करता है shoes and boots? Cobbler. Cobbler is also called shoemaker. Cobbler को हम क्या दूसरे नाम से बोल सकते हैं? Shoemaker. He is very helpful to us. I will draw. What is this? This is a needle. No, an anvil. How to draw anvil? C small दिस इज अ एनविल जिसपे शू मेकर शूज रख के स्टिच करता है. ओके. नाउ आई विल ड्रॉ थ्रेड. And then scissor. And this is the scissor. Our activities are done. I will talk about teacher. Right? A teacher is a great source of knowledge. Student, आपको knowledge कहाँ से मिलता है? Teachers आपको क्या देते हैं? Knowledge. Right? Prosperity and enlightenment by which anybody can be. Teacher is a great source of knowledge, prosperity and enlightenment by which anybody can be benefited. हमको बेनिफिट कहाँ से मिलता है? टीचर्स में से. आपको नॉलेज भी कौन देता है? टीचर्स देते हैं. राइट. देन टीचर आर द गिफ्ट ऑफ गॉड who make our carry and guide us towards success. आपको नॉलेज भी टीचर देते हैं. राइट. आपके पेरेंट्स है वो आपके लिए गॉड गिफ्ट है. राइट. तो टीचर्स भी आपके लिए क्या है? गॉड गिफ्ट है. वो आपको नॉलेज देते हैं, प्रोस्पेरिटी एंड एनलाइटमेंट. देन वो मेक अवर कैरीज एंड गाइड. वो आपकी कैरी भी करते हैं. राइट. आपकी कैरी कौन करता है? टीचर्स. आपको क्या सिखाते हैं? गुड मैनर्स. कौन सिखाता है? टीचर्स. एंड आपको गाइडलाइन भी कौन देता है? आपको लाइफ में सक्सेस होना है उसके लिए आपको गाइड भी कौन देता है? पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो. राइट. देन टीचर मेक देयर स्टूडेंट academically strong and they always encourage the student to do better in their life. वो आपको एकेडमिकली भी आपको इंकरेज करते हैं. आपको कैसे स्टडी करनी है, आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, वो आपको सब नॉलेज कौन देता है? टीचर देते हैं. राइट. वो थिंग्स यूज्ड बाय टीचर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चॉक, बुक. ओके. नाउ नेक्स्ट कोबलर. कोबलर क्या करता है? Cobbler are people who make and made by shoes and boot. वो हमारे shoes and boot रिपेयर करते हैं. Cobbler क्या करता है? Made by shoes and boot. Cobbler is also called shoemaker. Cobbler को हम दूसरे कौन से नाम से बुला सकते हैं? Shoemaker. Right. Next, he is very help to us. वो हमारे लिए
बहुत हेल्पफुल है. Okay. Children, now tell me, yesterday what did in class work? Which community help us? Doctor and postman. Okay. So I will again discuss about doctor. We things use a doctor: ambulance, syringe, stethoscope, first aid box, and medicine. Okay. Now next, postman. With things used by a postman: postcard, stamp, envelope, letterbox, and mail van. Right. Now I will going to take teachers things: blackboard, pen, table, chalk, duster, book, and chair. Again, blackboard, pen, table, chair, book, duster, and chalk. Okay. Now I will take cobbler things. Cobbler: scissor, needle and thread, anvil, thread and shoe. Right. Today's class for page number 36 and 37 in worksheet. Today's classwork is page number 36 in worksheet. First I will classwork and mention date. Our teachers use the following things to teach us. Color all the things, right? What is the color of blackboard? Green या black. Okay. Now next, pen. Now table. Chalk. What is the color of chalk? White and colorful, right? Now book. Book color is white. Duster. And chair. Now next, page number 37 in worksheet. First I will write classwork and then mention it. Oh, my shoes is broken. Cobbler made my shoes. Get it, come by 2:30. He used the following things to make the broken shoes. Broken shoes कौन रिपेयर करके देता है? कोबलर. Scissor.
Now anvil. Now thread. Now shoes. Our 2 pages are done. Thank you, children.